हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि बिगिनर जो हैं जो स्टार्टिंग से ये अमेज़ॉन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं और किस तरह ये चीज़ें समझ सकते हैं कि वो ऑनलाइन सेलिंग कर सकें। तो इसमें हम कुछ बात करेंगे कि ब्रांड के बारे में, ठीक है, फिर जो बल्क चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद सेलर अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए हमने आज अमेज़ॉन की यूनिवर्सिटी का विजिट करने की आज जो है ना वो कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम कुछ अमेज़ॉन की जो यूनिवर्सिटी है सेलर की उसके ऊपर आके हम कुछ चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका अमेज़ॉन का अकाउंट है तो तब भी ठीक है, अगर नहीं है तो आप फिर भी यहाँ पे सीख सकते हो, क्योंकि जिन लोगों के ऑलरेडी अकाउंट है उनको एक्सेस होती है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की या इस पेज के ऊपर आने की, दूसरे बंदे को वो एक्सेस नहीं देते। तो अगर आप स्टार्टिंग से करना चाहते हो, ये गाइडलाइन आपको चाहिए तो हाँ यहाँ से भी आपको मिल सकती है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ इसके बारे में बात की थी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ दिखाता जाऊँ। द बिगिनर गाइड टू सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, ठीक है। तो इंट्रो जो है उसमें ये वेलकम टू सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बात की थी, वेलकम टू द अमेज़ॉन, ठीक है। तो बिफोर यू स्टार्ट सेलर सेंटर लिस्टिंग प्रोडक्ट डिटेल डिलीवरी, ये आफ्टर सेल, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। द अमेज़ॉन राइट ऑफ माई बिजनेस, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड कराता जाऊँ। बिफोर यू स्टार्ट सेलिंग हाउ टू रजिस्टर, तो इसके बारे में हमने 2-3 बार बात की है। तो आज फिर आपको कुछ शॉर्टली बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए। मैं इसलिए बार बार चीज़ें बताता हूँ ताकि आपके ज़हन में हर चीज़ रस बस जाए, आपको कोई चीज़ भूले नहीं और आप जो है वो इस चीज़ को बहुत क्लोजली जाके देख सकें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है, इसमें 2 आते हैं जो हैं वो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक ये वाला और एक प्रोफेशनल, एक नॉर्मल जो है, ठीक है। इसमें 40 आइटम आप सेल कर सकते हो, 40 के ऊपर जाओगे तो ये आपको फिर प्रोफेशनल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी फ़ी भी है, ठीक है। अगर नॉर्मल की फ़ी ये है 0.99, ठीक है, पर सेल है ये, ठीक है, कॉस्ट जो है। और उसके ऊपर जाओगे इफ यू सेल मोर देन 40 आइटम, ठीक है, एंड ए मंथ द प्रोफेशनल ऑप्शन मेक ए लॉट ऑफ सेंस, ठीक है। तो आपको प्रोफेशनल अकाउंट के लिए ये प्लान फिर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको रिमाइंड कराता जाऊँ, ठीक है। अकाउंट बनवाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये बैंक अकाउंट, ठीक है, नंबर चाहिए आपका, उसके बाद क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए, गवर्नमेंट का इशू या वो आपका जो नेशनल आईडी कार्ड है आपके कंट्री का, वो इंडिया से पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश या अफगानिस्तान से जिधर के भी आपका जो नेशनल आईडी कार्ड होएगा तो वो या आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह चल जाता है। उसके बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन अगर आप दे रहे हो तो दे देना, अगर आपके मुल्क में नहीं है तो फिर आपको टेंशन नहीं है, फिर आपका फ़ोन नंबर आएगा, ठीक है। हाउ डज इट्स कॉस्ट टू सेल ऑन अमेज़ॉन, ठीक है। तो व्हाट इज़ कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपको मैंने कॉस्ट भी लास्ट टाइम बता दी थी। अमेज़ॉन FBA के लिए कौन सी है, शिपिंग के लिए कौन सी है, सेलिंग के लिए या और जो भी है इनके ऑप्शन, ठीक है। गेट टू नो सेलर सेंटर, व्हाट इज़ अ सेलर सेंटर, व्हाट इज सेलर सेंटर में ये आपको सब कुछ, ठीक है। ये आपका मोबाइल, आप मोबाइल में भी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, या इसको स्कैन भी करोगे तो आप इस तक पहुंच सकते हो। लिस्टिंग में बात करेंगे तो हाउ टू लिस्ट योर प्रोडक्ट, लिस्टिंग योर फर्स्ट प्रोडक्ट, आप लिस्टिंग किस तरह कर सकते हो ये भी हमने सीखा हुआ ऑलरेडी। मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ ताकि हम फिर नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसकी तरफ जो है ना अपना सफर जारी करेंगे। ये शॉर्टली वीडियो देख लें, फिर उसके बाद हम अपने मेन पॉइंट की तरफ जो आज हमने डिस्कस करना उसकी तरफ आते हैं। With millions of products already on Amazon and new products being added every day, we rely on selling partners to help us make sure customers understand exactly what they're ordering when they look at an Amazon detail page. To help keep all these products straight, we use product identifiers or product IDs.
product IDs are part of a system of unique identifiers called Global Trade Item Numbers, or GTINs. You're probably familiar with some of them. UPCs, ISBNs, EANs, and JANs are all acceptable forms of GTIN. If you've had a barcode scanned in a checkout line, you've seen them in action. When you list a product on Amazon, your product ID is confirmed against the GS1 database. GS1 standards are the most widely used in the world for product identification. If your product doesn't have a product ID, you have two options. You can purchase a GTIN from gs1us.org or apply for an exemption in Seller Central. An exemption will allow you to list your product without a product ID, but we'll need a few things first. Make sure you have the product category and brand name handy. You'll also need either a support letter from the brand or images of your product if you're the brand owner. Once you've got that squared away, it'll be time to get your products listed, providing a seamless shopping experience from product discovery to the customer's front door. ठीक है, आपको समझ आया तो ऑलमोस्ट इसकी आ गई होगी। आगे हम चलते हैं अपने जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ। व्हाट यू नीड फॉर लिस्टिंग, अभी इसके बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, आपने लिस्टिंग किस तरह करनी है, ये तीन ऑप्शन आपने जो है वो इनको फॉलो करना। ठीक है, ईमेल जो है प्रोडक्ट आईडी वगैरह, ठीक है, जो आपने वीडियो में देखा है। उसके बाद बात करें डू नॉट हैव ए अमेजोन सेलर अकाउंट, तो आप साइन आउट करोगे। ठीक है, द प्रोडक्ट डिटेल पेज, ठीक है, इसमें मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने जो पॉइंट जिस तरह करना है, जिस तरह आपने अपना कोई भी आपकी जो चीज़ है जो आपने लिस्टिंग करनी है उसमें आपने ज़रूर फॉलो करनी है। नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे ये आपकी पिक्चर होएगी। ठीक है, नंबर 3 पे आपने फिर उसका जो है पिक्चर वो क्लियर करनी है सब। ठीक है, इसमें पिक्चर आपकी होएगी, इसमें पिक्चर आपने अपलोड करनी है, इसमें फिर आपने इसका जो है वो डिटेल देनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इधर फिर आपने इसका डिमेंशन वगैरह। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसका जो भी है इसमें कुछ चीज़ बैटरी वगैरह है या नहीं है। ठीक है, ये आपने बताना है। और उसके बाद नंबर 7 पे आपने इसकी जो अभी वो कीवर्ड वगैरह या जो बुलेट भी होते हैं पॉइंट वो आपने नोट करने हैं। ठीक है, ठीक है, ये देख लें। नंबर 1 पे ये है, नंबर 1 पे ये इसके, ठीक है, जितने भी है ये कितने का जो लेटर आपने इसको नाम देना है। उसके बाद इमेज आएंगे। ठीक है, उसके बाद सच है डिफरेंट जो भी इसके कलर हैं। ठीक है, वो आप साइज जो कलर जो भी चीज़ होएगी उसके बाद बुलेट पॉइंट आएंगे। ठीक है, उसके बाद बाय बॉक्स आपने लेना है। उसके बाद जो प्राइस होती है वो है। ठीक है, डिटेल पेज, कस्टमर कैन ऐड ए थर्ड आर्ट, तो बाय बॉक्स के लिए। ठीक है, अदर ऑफर जो आपने ऑफर लगानी है। उसके बाद आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो डिटेल जो आपने देनी होती है। इंट्रो भी हो गया आपका, उसके बाद वेलकम भी हो गया आपका, उसके बाद अमेज़ॉन का जो, ठीक है, गाइड से वो भी जो स्टार्ट भी हो गया। रजिस्टर किसे करना है, सेलर्स सेंटर भी आपका हो गया। हाउ गेट टू नो सेलर सेंटर, व्हाट इज सेलर सेंटर। ठीक है, ये भी वेब भी हो गया, लिस्टिंग भी हो गया, डिटेल भी हो गया। उसके बाद ये रह गया। ठीक है, हाउ टू डिलीवरी प्रोडक्ट। ठीक है, सेलेक्टिंग द राइट फिलमेंट ऑप्शन। ठीक है, जो आपने ऑप्शन लेना है अमेजोन FBA या अमेजोन FBM जो भी आपने करना है। ठीक है, अमेजोन FBA होएगा तो फिर उसका अमेजोन जो है रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका अमेजोन FBM है तो फिर आप खुद रिस्पॉन्सिबल सब की चीज़ के। ठीक है, ओनली अमेजोन आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेगा अपनी एप्लीकेशन के, अपने ऐप के ऊपर। बाकी काम आपने खुद करना होता है। ठीक है, ये ऑप्शन देख रहे हो। सेल्फ में आता है अमेजोन FBM। ठीक है, फुलफिलमेंट योर ओन ऑर्डर। ठीक है, अगर आप खुद करते हो तो ये आपकी डिटेल ये वेल पूरी है। ठीक है, अमेजोन FBA है। ठीक है, M है। ठीक है, अमेजोन FBA में द बेनिफिट ऑफ फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है, जो भी होएगा वो सब कुछ फिर अमेजोन इसका रिस्पॉन्सिबल होएगा। आपने मोर डिटेल में जाना है तो आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। हाउ टू वर्क FBA। ठीक है, डू नॉट हैव ए अमेजोन सेलर अकाउंट। ओके, हाउ टू फिलमेंट। ठीक है, बाय अमेजोन वर्कर। ठीक है, इसमें 4 स्टेप हैं। ठीक है, शिप योर इन्वेंट्री टू अमेजोन, इट विल बी, ठीक है, स्कैन्ड एंड मेड अवेलेबल फॉर सेल।
ठीक है, ये होएगा। फिर ये देखिए अमेजोन पैकेज टू शिप एंड प्रोडक्ट, ठीक है, डायरेक्टली अमेजोन जो है वो कलेक्टर पेमेंट, ठीक है, जो भी है वो फिर अमेजोन देखेगा, अमेजोन की जो पेमेंट के लिए पॉलिसी है, ठीक है। अमेजोन कलेक्ट द पेमेंट फॉर द कस्टमर पेज यू अवेलेबल ऑन एवरी 2 वीक, आपको 2 वीक के बाद पैसा मिलेगा जो है। अमेजोन कस्टमर 4 नंबर पे आता है, अमेजोन कस्टमर सर्विस टीम, ठीक है, हैंडल द क्वेश्चन रिटर्न, ठीक है, एंड फाउंड जो रिफंड, मसलन जो आपका अगर कोई आपका ऑर्डर जाता है उसमें कुछ मसला आता है, अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करता है तो उसके लिए आपको जो रिटर्न करना होता है, मतलब सामान उसका वापस लेके आना, फिर उसको नया देना, ये फिर ये भी अमेजोन देखता है पूरा। उसके बाद आता है आफ्टर सेल। आफ्टर सेल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है, यू मेड योर फर्स्ट सेल, ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट, ठीक है, मैनेजिंग योर अमेजोन बिजनेस, ठीक है, उसमें आपको जो जो ऑप्शन अमेजोन देता है उसमें यह योर फर्स्ट सेल इज बिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर आपकी आएंगी, ठीक है। ये देख रहे हैं मुकम्मल। उसके बाद आता है ये परफॉर्मेंस मैटर, जो भी है आपका सिस्टम है, कस्टमर रिव्यू, ठीक है, ये चीज़ें पूरी आएंगी। इसमें परफॉर्मेंस में आपको ये जो स्टार मिलते हैं, जो भी कस्टमर कोई चीज़ बाय करता है आपके स्टोर के से आके, तो वो अगर चीज़ उसको अच्छी लगी है, जो आपने अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है, तो फिर आपको वो स्टार ये देगा 1 2 अगर होएंगे तो फिर ये आपके समझे लो है, 3 आएगा तो ये मीडियम है, 4 आएगा तो थोड़ा सा अच्छा है, 5 आएगा तो सबसे अच्छा, ठीक है। इसमें ये आता है ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है बिजनेस की, आप ग्रोथ किस तरह करना है आपने, ये सब कुछ इस स्टेप में है, ठीक है। स्टोर, ये ब्रांड वगैरह, प्रमोशनल, ये भी जो कूपन वगैरह होते हैं, ठीक है। ग्लोबल एक्सप्रेशन भी ऐसा है, इसमें प्रमोशन हो गया आपका। अमेजोन बिजनेस स्टेप के में स्टेटस अबाउट द बी टू बी, ठीक है, कस्टमर का जो है ये भी आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अमेजोन बिजनेस में आपने देख लिया ऑलरेडी है, व्हाट मेक ए ग्रेट सेलर, ठीक है, आप किस तरह अच्छे सेलर बन सकते हो। ए प्ले बुक, आपने अच्छी सेलिंग के लिए, अच्छा बिजनेस करने के लिए अमेजोन की पॉलिसी है, ठीक है। यूज ए 5 सेलिंग प्रोग्राम ब्रांड रजिस्ट्री ए प्लस कंटेंट फिल्मेड बाय अमेजोन, ठीक है। तो आपके लिए ये अच्छा, ठीक है, इनरोल करें इसमें, आप खुद को इनरोल करें, इनरोल योर ब्रांड रजिस्ट्रेशन, मतलब आपने ब्रांड बनाना है तो आप की जो ये पॉलिसी है अमेजोन की, इसको फॉलो करना पड़ेगा। सेटअप योर विद फिल्मेड बाय अमेजोन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट डिटेल पेज, ये सब कुछ आपने फॉलो करना है। ऑटोमेटिकली प्राइस ऑन योर ऑफर्स, ठीक है। अमेजोन के जो कैलकुलेटर आप उसको यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक अमेजोन आपको प्राइसिंग बता देगा। ग्रो में देखते हैं सेल मोर विद अमेजोन, ठीक है। व्हाट इज अ परफेक्ट लॉन्च, ठीक है। फर्स्ट 90 days आर स्पेशली, ये आपको देखना पड़ेगा आपने फर्स्ट 90 डे में क्या करना है, ठीक है। इन योर ब्रांड इन ब्रांड रजिस्ट्रेशन, ये आपने पहले जो देखा वही है, ठीक है। रजिस्टर ये कंटेंट, ये फिल्मेड बाय अमेजोन, ये प्राइसिंग, ये वो सेम ही है कुछ। रजिस्टर योर ब्रांड, अब लिस्टिंग किस तरह करनी है, ठीक है, ये बता रहा है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बड़ा मुश्किल काम नहीं है इसमें कोई भी। एडजस्ट प्राइसिंग, ठीक है। तो आप इसमें प्राइस जो है एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिकली भी कैलेंडर यूज कर, उसका कैलकुलेटर यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली भी वो कर देते हैं। शो योर ऑफर, वी विल हेल्प यू टू गेट स्टार्ट, ठीक है। आपको वो टीच भी करेंगे, ठीक है, इस तरह ये इस रोल को फॉलो करते हुए।
ये देख रहे हो ब्रांड रजिस्टर किस तरह आपने करना है, ओवर 5, ठीक है, 50 है कि हाउ टू गेट योर अमेजोन सेलिंग प्रोग्राम जो परफेक्ट लॉन्च है अमेजोन, ठीक है, सेलिब्रेट 2021। इसमें भी आप जाके हेल्प ले सकते हो। FBA शिपमेंट विद सेंड टू अमेजोन, ठीक है, FBA किस तरह का है, फिर ब्रांड रजिस्ट्री किस तरह का है, आप इनकी जो ये वीडियोस हैं ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो आज तो बेहतर है कि हम अमेजोन FBA के बारे में बात कर लें, सबसे बेस्ट यही है। देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं। Hi everyone, welcome to Creating Fulfillment by Amazon Shipments with Send to Amazon. Thank you so much for taking the time out of your busy day to be here with us. My name is Haley Barton and I'm a senior manager within the Fulfillment by Amazon team. My team's focus is on the shipment creation process, so finding ways to make it seamless and intuitive for each of you when you're ready to send us your inventory. Hello everyone, and I am Jay Gu. I am a product manager at Amazon, and my role is to build solutions to educate sellers on inbound requirements and prevent inbound problems. Jay and I are super excited to be here with each of you. In this session, I'm going to start by talking about our new Send to Amazon shipment creation workflow and how we're aiming to simplify shipment creation. I'll take you through our North Star vision for Send to Amazon, the benefits the workflow offers today, and how you can partner with us to make the workflow even better and more efficient for your process. Finally, Jay is going to talk through the benefits of proper shipment creation, some common mistakes we see that result in receiving delays, and how you can resolve these issues and avoid them in the future. If you have any questions over the course of this session, you can submit them directly to us through the event platform. Just type them into the Q&A box. The most popular submissions based upon audience upvoting will be answered live at the end of this session. All right, first things first. What is Send to Amazon and how does it simplify shipment creation? Send to Amazon is our new workflow for creating FBA shipments, which many of you may have already had the opportunity to try out. It's offered in Seller Central, and it's an alternative to the existing send/replenish inventory workflow. There are no fees or sign-up required, and it's available to each of you in every FBA marketplace. So why did we create a new shipment creation workflow? Through talking with many of you, we consistently heard three key themes about our existing shipment creation process. First, you told us that it's tedious and it doesn't allow you to save default preferences or details such as box content information and shipping box weights and dimensions that rarely change shipment to shipment. Second, we heard from you that it's rigid and it doesn't always mirror your physical operations. So as an example, let's say your supplier packs boxes in advance of when you plan to ship your inventory to us, but you're unable to provide box content information or print labels until the last step of the process. And this creates workarounds for you, given the disconnect between your physical operations and the steps of our current workflow. Finally, we heard that it's challenging and unintuitive, especially the first few times you go through it as a new seller. You don't know what information you need to have prepared when you start, and you're not sure how to get help when you get stuck.
So with these key pain points in mind, I want to talk through our North Star vision for Send to Amazon so you know what we're building towards. Our vision is to create a workflow that is flexible so it meets your unique needs and supply chain. We want it to be simple so it saves you time so that you can focus on the more strategic aspects of your business, such as building your brand. Finally, we want it to be intuitive so it's easy to understand and seamless to comply with our shipping requirements. So now that you know what we're building towards, let's talk through the benefits that Send to Amazon currently offers. I'm going to talk through 4 key benefits that you can take advantage of today. So first, we've simplified the workflow. Using cutting-edge Amazon technology and design, we've stripped out all the unnecessary steps, and we've updated the user interface with intuitive design elements that allow you to create an FBA shipment in as few as 3 steps. So on step 1, you'll choose your inventory to send. Step 2, you'll confirm your carrier and shipment method. And on step 3, you'll print and apply your box labels. Then you're ready to hand off your boxes to your carrier. And it's just a couple more steps if you're sending us pallets or you're shipping cross-border. We've also embedded tooltips, which are these question mark icons that you'll see throughout the user interface, and video clips on each step of the workflow, helping you with that task. Second, we've introduced something new in Send to Amazon called a packing template. So for your case pack inventory, in which each shipping box contains just 1 SKU, you can now save your pack, prep, and labeling details in a packing template, which is saved once, and then you can reuse those same details shipment to shipment, eliminating repetitive entry when you replenish your inventory. You can create and edit packing templates at any point in time from step 1 of Send to Amazon, giving you flexibility to provide these details in advance, not just when you're ready to send in inventory. Next, in Send to Amazon, you can pack both single SKU boxes and mixed SKU boxes ahead of confirming shipments. This allows you to pack boxes ahead of time, not just when you're ready to ship. You can make any adjustments as you go. For example, let's say you need to update box content information because some units got damaged during the packing process. Also, this allows you to maximize space within your box, as packing is not constrained by our shipment destination allocations. So some of you may be wondering, well, what if my supplier or warehouse can only pack boxes after I confirm products and quantities to ship? Well, great news, this process still works in Send to Amazon. On step 1, you'll select individual units in the packing details to tell us the number of units you want to ship for that SKU. Then, once your warehouse or supplier has confirmed availability of this inventory, navigate to step 1B to see your pack groups. So pack groups tell you which SKUs can be packed together, regardless of the shipment destinations. Send those pack group details to your warehouse or supplier so they can start packing. And then once your products are packed according to our pack groups, enter your box content information, and then proceed to step 2 to see shipment destinations and transportation options. Finally, Send to Amazon consolidates all of your shipments and costs onto the same screen, making it easier to compare and contrast options and make informed decisions about how you ship your inventory. On step 2, if your inventory is eligible for partnered carrier or Amazon freight options, you'll see the pricing for each shipping mode offered. And we're able to display these estimates because you already provided that box content information in the previous step. All right, so far we've talked about our North Star vision for Send to Amazon,
as well as the benefits that you can take advantage of today. Next, I'm going to highlight a couple of the exciting upcoming features that we're building and will be launching and sent to Amazon soon. First is box level placement. So ये by जो सर्कल है ना partnering ये with आपके लिए बहुत UPS इंपॉर्टेंट है, ये for आपके लिए shipments जानना within कि the US, इसका जो we will प्रोसीजर है वो send क्या है, ठीक है। eligible ये आपने shipments to थोड़ा अच्छे से multiple समझ लेना। destination fulfillment ये बार कोड centers का और at शिफ्टिंग का, no ठीक है, extra cost बॉक्स to लेवल you. का जो है वो भी और This will दूसरा भी। enable us to receive and make your inventory available for sale quicker. Second are prime eligible estimates. We will start surfacing a high confidence estimated date for when Amazon will receive your shipment and have your inventory prime eligible for your customers, helping you plan your inventory and remain in stock. We will show you these estimates in step 2 of Send to Amazon when you're creating shipments. These will also display on your shipping queue and ship and events pages after you've created shipments so that you can track the latest estimate. My colleagues will be sharing more details on this initiative in tomorrow's session on Fulfillment by Amazon, Receiving and Reconciliation, so tune in there for more details. So come partner with us on this journey to build a great shipment creation experience. With your help, we can build a workflow that is seamless and complements your unique pick, pack, and ship process. So why is your partnership so important in this journey? Well, we're building Send to Amazon in an iterative manner so that we can get your feedback on what you liked, what's not working, and make adjustments as we continue to scale the feature set. And this is why we need your ongoing feedback in this process. We are listening and we're continuously ये आप evolving स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ये बहुत फायदेमंद है। ये जो टॉपिक आपको शो हो रहे हैं ना, ये आप अपनी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके इसको समझ सकते हो। Let's take a quick look तो at बेस्ट what यही है we've कि heard आप from you so इसका far. स्क्रीनशॉट ले लो First, ताकि many आपकी of you हेल्प have करे found that Send आपकी to अपनी लैंग्वेज Amazon में। is easy and it saves you time, especially after 1 or 2 tries of getting used to the new process. However, because we are building Send to Amazon iteratively, some of you have highlighted pain points in the workflow, and we're fixing those as quickly as possible. As an example, some of you have told us that when you send single SKU case pack inventory, at times you need to send in a partial case. ये FBA So के as an लिए example, खसूसन ये let's जो है say ना, you generally ये pack FBA 20 के लिए। units per box of SKU A, and then you have 3 leftover units that you also want to send to us. Well, earlier this month, we added an option to add a new packing line in step 1 under More Inputs, and this allows you to add more than 1 packing configuration per SKU to your workflow. So please come partner with us by trying out Send to Amazon and providing your feedback. If you've never tried Send to Amazon or haven't tried it recently, please try it again as we're constantly improving the workflow to better meet your needs. We have 2 main ways in which you can provide us your feedback. First, we have feedback links on each step where you can report a bug or provide step-level feedback. We also have a short survey at the end of the workflow. So once you've gone through the full process, let us know what you liked, what you ये didn't बहुत like, इम्पोर्टेंट and what आपके लिए ये improvements जो you है want ना, to see next. ये कस्टमर आपको फीडबैक While देगा we इससे। can't directly respond to each piece of feedback, we track it and we use it to prioritize the next set of improvements and features we build in the workflow. We know that learning any new process has a learning curve and it requires an investment on your end. So we've created many resources to help you ये onboard to benefits the to new send to process, such benefit for as Seller send to Amazon, University ठीक है। videos, ये बहुत which you can इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने access पहले in बात की इसके Seller बारे में, व्हाट University इज or on each सेंड टू step of Amazon, the ठीक है। workflow. आप क्या क्या चीजें We सेंड कर also सकते have हो। detailed Send to Amazon help pages and tooltips. Again, these are Send all to embedded Amazon throughout the offers user interface. है शॉर्ट फिर We've हेल्पफुल consolidated these resources in our Send to रिसोर्सेज यहाँ से Amazon आप general चीज बाय information करते page हो। as well, which is available in Seller Central across every marketplace.
Now that we've introduced our new shipment creation workflow, Jay will talk about some of the common mistakes made during shipment preparation and how you can avoid them to make sure your inventory is received as quick as possible. Thanks, Haley. Let's move on to discuss the benefits of proper shipment creation. You might ask, what are the benefits of proper shipment creation? I want to share a simple example before answering this question. Recently, one of our FBA sellers was shipping a large number of products into Amazon, but accidentally शिप में जो आपको put the प्रॉब्लम incorrect वगैरह आएंगी labels ना, on those products. जो आपको दुश्वारियां वगैरह जो The आपको seller जो was भी very anxious, but the इशू inventory आते was हैं received उसके बारे में according to the transportation record, but did not show up in their account. Eventually, we were able to work with the seller to locate the inventory in our warehouse and reapply the correct labels. The seller appreciated our effort. In this example, you can see the proper shipment have at least 3 key benefits to your business. First, ensure accurate tracking of your shipments. In this case, seller wasn't able to track the inventory because of the label error. Second, ensure fast distribution and store after being received. In the example provided, we have to conduct extensive research to find the inventory, which was time-consuming. Finally, proper shipments ensure your inventory will reach customer quickly. Great. Now you understand the importance of proper shipment. My goal is that in the next 10 ये देखें minutes, प्रॉब्लम के बारे में you will टिप्स दे learn रहे हैं 5 अभी tips from me ठीक है on how to avoid the most आपको जो common जो inbound टिप है इनको problems. गौर से And समझना if you work with the supply chain partners to purchase, prepare, or ship your inventory, then these tips are also helpful for them. Tip number 1. Ship to the ये fulfillment फिलमेंट centers सेंटर फिलमेंट सेंटर designated 1 in your 2 3 shipping ये आपने कोर्स देखना है ठीक है By default, इन्वेंट्री जिस तरह आपका when स्टोर you किया create a जाता है shipping सामान plan, ये फिर your थर्ड ऑप्शन shipment may be आता है जिस तरह वो divided ड्राइवर into पे multiple जाके shipments, शिपमेंट each करते हैं directed ठीक है to a ये different चीजें receiving बहुत ही center or मीनिंगफुल है fulfillment आपके लिए The fulfillment centers are selected based on a set of factors, including, first, your location, where you are shipping from. Second, the types of products you're shipping, as we need to match the type of products to the corresponding fulfillment centers. Third, consumer demand for the products. And finally, the available capacity of the fulfillment center. For example, if there's a backlog in a particular fulfillment center, we do not want your inventory to be shipped, only to be waiting in the line. Imagine if you ship your products to the wrong fulfillment center, then Amazon associates will have to conduct a manual investigation to troubleshoot, and eventually cause delay to shipping those products to your customers. So to conclude, always ship your product to the designated fulfillment center. Tip number 2. Remember, अभी स्टेप 2 each की बात box हो रही you है send to ये स्टेप Amazon 2 के ऊपर आपने requires a काम करना unique देखना इसको FBA box ID. This box ID actually Which plays box an you incredible send important to role, ठीक which है helps तो Amazon जो भी understand है what's बॉक्स के inside ऊपर the जो box ये without देखो जिस opening तरह the box. अमेज़न FBA ये As a बॉक्स result, ठीक है आईडी ठीक है we can लेबल्स quickly distribute ये those गौर से boxes समझना ये across बहुत our इंपॉर्टेंट बात हो रही fulfillment है network. A simple इंस्ट्रक्शन टू example is अप्लाई like फॉर delivering a बॉक्स pizza. लेबल्स You want to rely on the label on the box. आप जो during है the वो उसका जो fulfillment बार कोड process. किससे लगाओगे The ठीक है last thing लेबल you जो want is to open the होता है pizza box to जिससे see वो what फिर kind of pizza आइडेंटिफाई is कर सकें inside. आपकी जो आइटम है Usually we see 3 common mistakes. The first, forgetting to put the ID on the box. Second, reusing the same box ID on a different box. And the third one is regarding pallets. The rule is that each box inside the pallet should have its own box ID. The reason is that when pallet is received, we will remove those boxes from the pallet. And at that moment, we'll still need to rely on the box ID to understand what's inside each unique box. So to conclude this tip, the key is to remember that Amazon relies on those box ID to understand what is inside the box. So it is crucial to make sure
those IDs applied to your box correctly. Tip number 3, provide अभी accurate स्टेप 3 की box बात हो रही content है. information. In the send to Amazon workflow, if you pack your inventory in multiple boxes in a shipment, you will be prompted to upload your box packing details using either a spreadsheet or web form. You can then click on स्टेप View 1 में Contents कंफर्म to see इन्वेंट्री how है the टू boxes सेंड, are ठीक है. स्टेप 2 में allocated शिपमेंट across है. each shipment. अभी स्टेप 3 की बात So हो the रही है. common ये अपने issue गौर से observed देखनी हर is चीज. virtual and physical mismatch between what you stated inside the box and what is actually inside the box. You might not think it is a big problem, but it आप can यहाँ actually से cause a lot जो of है वो unintended जो downstream impact during the डाउनलोड receipt करोगे जो process. बार कोड वगैरह आपको To give सेंड you a किया simple जाएगा, example, ठीक है. ये आप प्रिंट आउट Let's भी कर imagine your सकते हो. packing details indicate you have 2 boxes. Each has 5 red pens and 5 pink pens. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत Instead, इंपॉर्टेंट. You or your supply chain partner put all 10 pens in one box and the other 10 pink pens in another and ship them to Amazon. Then those 2 boxes अगर आप इसको are समझ के distributed करोगे to तो 2 बहुत separate easy है. fulfillment centers based on the customer demand. So when we open the box, we have to understand what are you actually shipped to us. All those will require manual investigation and cost delay during the receiving process. So to conclude, providing us with accurate box content information also reduces the chance of boxes getting sidelined for manual investigation, and thereby making your inventory available for sales faster. Tip number 4. Be sure to give अभी each स्टेप नंबर item 4 आया, a ठीक है. scannable barcode. ये मेन होते हैं बार कोड, ठीक In है. general, यूपीएस you have 2 एंड options when it comes to labeling your GTIN, ठीक है. products. Manufacturer barcode or Amazon barcode. There are 2 common mistakes ये with कल आपने labels. फ्री वाला यूज करना है, ठीक है. First, multiple barcodes. एसएन You वगैरह might जो have a नंबर जो होता है, manufacturer ठीक है. barcode, ये but decide to go GTIN with Amazon जो बार barcode. कोड इसको बोला In जाता है, that ठीक है. situation, make sure ये you क्या cover barcode? original manufacturer's barcode. You should never have both manufacturer barcode and Amazon barcode on the same product. Second, missing barcodes इधर भी बता रहा when है, be using sure Amazon label service. टू गिव ईच एटम, ठीक है. Remember, if you want to use स्कैनेबल Amazon बार label कोड service लेबल्स, to put ये Amazon आपने barcode बहुत on गौर your से product, देखनी है. your product must arrive at Amazon with the original manufacturer barcode. Finally, if you use Amazon barcode, provide all required ये देखिए information ये एसएन लिखा हुआ on है. the Amazon barcode labels, including barcode, string कंडीशन न्यू होनी identifier, चाहिए आपका यूज का, product जो भी title, या तो यूज and item न्यू होता है, ठीक condition. है. डिस्क्रिप्शन में आपने तफसील देनी है, टाइटल Now I वगैरह have देना है, ठीक है. introduced 4 एसएन tips. वगैरह जो I'm नंबर going होता to है, ask ठीक है. Haley for some ऑप्शनल, help. ठीक है. मर्चेंट कंफर्मेशन ये ऑप्शनल है, ठीक है. Hey, Haley, pop quiz. Can you still remember the four questions or 4 tips I have just होप introduced? करता हूँ कि आपको Oh, wow. इसकी Let's समझ see if आ I गई can होगी जो do मैं this. आपको बताना चाहता All था. right. अगर आपको इस 1. वीडियो Ship to को the समझ ना लगे fulfillment तो आप कमेंट से centers पूछ सकते हैं. अगर designated वीडियो in अच्छी your लगी तो shipping लाइक और शेयर plan. करना मत भूलें. That's good. Tip 2, give each box a unique FBA box ID. अभी फिर ये आप गौर से देख लेना, ठीक है. Tip स्टेप बाय 3, स्टेप अभी फिर provide बताएंगे. accurate box content स्टेप 1, information. स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है. And tip 4, give each item a scannable barcode label. एंड How'd I do, स्टेप Jay? 4, That's a great job. Thank you, Haley. स्क्रीनशॉट ले लो So इसकी. no सबसे worry if बेस्ट you यही can't है. remember it. Then there's tip number 5, in which we provide a couple of ways you can find this information in Seller Central, including help page, एंड स्टेप Amazon 4 Seller लास्ट Requesting, टाइम. and inbound performance fulfillment. फाइनल जो है वो स्टेप 5 है, ठीक है. स्टेप 4 के बाद Hopefully you still remember the 5 tips. Finally, we consider it a partnership that ये we're पिक्चर supporting देख लो, you आपको और ज्यादा to समझ better आ जाएगी enjoy our fulfillment service एक्चुअली अमेज़न किस and तरह get काम your करता है. inventory क्योंकि अभी अमेज़न customers पूरी faster. दुनिया में छाया हुआ है, तो आपको भी partner with काम us करना and चाहिए use इसके ऊपर Send to आके. Amazon today. सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इशू है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट्स में जो आपके कमेंट्स हैं उसमें आप अपना क्वेश्चन रेस कर सकते हो. नेक्स्ट में हम ये देखेंगे, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, अमेज़न के, ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे. फिर स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें देखेंगे ताकि हमको मुकम्मल इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो हम इसमें मुकम्मल अबूर हासिल कर सकें, ठीक है. ये आपको ये जो
ब्रांड रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, आपने ब्रांड किससे रजिस्टर करना है, ये तफसील है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ये चीज़ें देख लो, ठीक है। इसमें ये कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई भी इतना आपको ज़्यादा हैवी अमाउंट नहीं चाहिए इसके लिए, बहुत ईजी है, बहुत ही नॉर्मल है। तो और वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो के लिए, लर्न करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब लाजम करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपका फ्यूचर बनाने वाला है, आपको एक आपके ड्रीम की तरफ, आपके ख्वाब की तरफ लेके जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक तक। तब अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ध्यान रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।